है. Okay. So इसमें से कुछ भी प्रूफ हो 1 1 और on 2? सर 1 1 हो गया था, ऑन 2 नहीं हो रहा. On 2 में डाउट है. Okay. Question number 9. Be defined by f and कुछ एग्जाम्स कब से हैं? सर 17th June. 17th June and syllabus? सर matrices. Only matrices? Yes sir. Okay. And belongs to natural number. ठीक है, we have to check this as bijective. So हम दोनों ही पार्ट कर लेते हैं. 1 1. So 1 1 में क्या हो गया? Different element have the different images. So ये 1 1 है? No sir. No, है ना? तो हम कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल f1 हम दे देते हैं ना. So f1 का मतलब 1 plus 1 by 2. Because 1 is odd, so we will choose first part. So we get 1. So 1 have the image 1. Now we can try 2. So this is 2 by 2. This is equal to 1. So 1 and 2 have the same image. Have the same image 1. Hence it is 1 1. Sorry, hence it is many 1. Not hence f is not 1 1. Okay. Next is on to check करते हैं फिर. अब हमारे पास यहाँ 2 सेट्स क्या हैं? फर्स्ट n to n है. ओके. सो यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है. नाउ आप यहाँ पे पुट करेंगे एंड हियर यू हैव अ नेचुरल नंबर. तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन ऑड एंड इवन. ठीक है. अगर हम ये कहते हैं इफ n is an odd natural number, then 2n minus 1 is also an odd natural number such that
ओके, सो हमने यहाँ क्या किया, कुछ वी हैव दिस नेचुरल नंबर, हमने इसको डिवाइड कर लिया। हम ऑन टू चेक कर रहे हैं, सो वी विल चेक द सेकंड सेट। हमने इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, ऑड एंड इवन। ठीक है, सो फर्स्ट हमने एन लेट किया, एन इज ऑड। हमने यहाँ से एन लेट कर लिया और हमने कहा दिस इज अ ऑड। नाउ अब हमें चेक करना है कि अगर हम ऑड नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी प्री इमेज है। ठीक, अब ये जो हमें फॉर्मूला दे रहा है एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, ये फॉर्मूला हम एफ एन इज इक्वल टू वी हैव दिस एन प्लस वन बाई टू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि अगर हमने यहाँ कोई ऑड नंबर पुट किया, सपोज हमने पुट किया टू एन माइनस वन एंड वी गेट एन। सो अगर यहाँ टू एन माइनस वन पुट कर रहे हैं देन वी विल गेट अ एन। यानी अगर हमने यहाँ ऑड नंबर पुट किया तो हमें यहाँ ऑड नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ ऑड नंबर्स होंगे सबकी प्री इमेजेस होंगी। Yes, sir. ठीक है, हम इसमें से n यहाँ पुट नहीं कर रहे हैं, वी आर पुटिंग टू एन माइनस वन। ठीक, हमने टू एन माइनस वन पुट किया, हमने देखा आंसर क्या आ गया n। तो यहाँ जितने भी ऑड नंबर्स थे इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय n। तो हमने कहा यहाँ जो भी ऑड नंबर है सबकी प्री इमेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 5 पुट करते हैं, 5 प्लस वन बाई टू कितना आ जाएगा, दिस इज 3। तो यहाँ जो 3 होगा वो एसोसिएट हो गया विथ 5। Okay, sir. जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 3 4 5। तो 1 3 5 अगर हम चेक करते तो 1 कब आएगा, जब यहाँ हम क्या पुट करें 1। 3 कब आएगा, जब हमने यहाँ क्या पुट किया 5। 5 कब आएगा, जब हमने यहाँ क्या पुट किया 9। उसका मतलब 1 इज एसोसिएटेड विथ 1, 5 विथ 3, 9 विथ 5 एंड सो ऑन। तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे सब एसोसिएट हो जाएंगे, सॉरी सबकी प्री इमेजेस होंगी इन द फर्स्ट सेट, सेट ए। तो हमने इन्हीं नंबर को 1 3 एंड 5 इन सबको हमने डिनोट कर दिया बाय एन। सो फर्स्ट केस में हमने कहा कि एन कोई ऑड नेचुरल नंबर है, और यहाँ हम एन की जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड सेट। तो हमने देखा अगर हम हमें हमें एन चाहिए इन सेट बी, तो क्या यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम पुट करेंगे एंड वी विल गेट एन, सो दैट इज टू एन माइनस वन। तो हमने कहा कि इफ एन इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, देन 2n minus 1 is also an odd natural number such that this is equal to n. So odd हमने चेक कर लिया। even के लिए हमने अगेन चेक किया, let if n is an even natural number, तो n हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं अब even 1 2 4। तो हमें चेक करना है कि क्या यहाँ कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम पुट करते हैं एंड वी विल गेट n एंड दिस इज n इज even। ठीक, तो हमने चेक किया even के लिए क्या कंडीशन है n by 2। तो अब हमने चेक किया अगर हम 2n पुट कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ टू एन पुट किया देन फाइनली वी गेट द आंसर n। यानी यहाँ जो भी टू एन नंबर हम पुट कर रहे होंगे वो हमें हमेशा n देगा। तो इसका मतलब इवन नंबर्स जो होंगे उनकी भी प्री इमेजेस होंगी। कुछ ये क्लियर हुआ, ये इसमें डाउट है अभी, Sir, क्योंकि हो गया clear. है ना थोड़ा सा n की वजह से कंफ्यूजन हो रही होगी Yes, आपको। sir. मे बी ये लग रहा होगा कि ये जो n है दिस वी आर चेकिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। वी आर चेकिंग दिस n फ्रॉम द सेकेंड सेट। हमने कहा कि ये n और नेचुरल नंबर है इन द सेकेंड सेट। तो अब हमें ये चेक करना है ये n कब आएगा, यहाँ कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे सो दैट वी विल गेट n। n क्या है, दिस इज ऑड नंबर, है ना। अगर ये ऑड है तो हम यहाँ ऑड ही पुट करेंगे एज पर दिस फॉर्मूला, देन ओनली वी विल गेट दिस ऑड नंबर। तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन अगर हम पुट करते हैं देन वी विल गेट दिस ऑड। सिमिलरली अगर यहाँ हम टू एन पुट कर रहे हैं वी विल गेट दिस इवन नंबर विच इज n। क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट? No, sir. ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. Okay, okay. So next, last topic is composition of function. Okay. Our last topic is
कंपोजिशन और इसके बाद है फिर इनवर्स. ओके, सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. Let a to b and g b to c b b two functions, then composition composition of f and g is denoted by GOF and is defined as GOF A to C given by GOFX is equal to GFX for all x belongs to A. Next is for the composition GOF to exist, the range of f should be a should be a should be the range should be a subset of domain of प्लीज नोट डाउन दिस, फिर डिस्कस करते हैं एक्चुअल में है क्या कंपोजिशन. Sir, noted. Okay. Now suppose kuch we have this function, this is a to b. Okay, this is set A, this is set B. Suppose here we have the element a1 a2 a3, and here we have the element b1 b2 b3, and let this is b4. So a1 is associated with b1, a2 with b2, and a3 with b3. Now we have another set C, which have the elements C1, C2, C3. Now this now we have another set G, which is from B to C, and this is associated with this one. This is associated with this, and this with this. Let this be C4 यहाँ पे. ठीक है. सो कंपोजिशन क्या होता है? अभी हमारे पास ये फंक्शन है A to B. नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास फंक्शन है B to C. हम अब एक न्यू फंक्शन फॉर्म करेंगे with the help of A and C. ठीक है, B नहीं होगा. We will form a new function A to C. वो कैसे होगा? यहाँ पे हम कर लेते हैं पे, ठीक है, दिस वन. तो यहाँ से हम मैच भी कर सकते हैं वैल्यूज. सो दिस इज A एंड दिस इज C. हम एक फंक्शन फॉर्म करेंगे GOF A to C. ओके, दिस इज रीड एज कंपोजिशन ऑफ F and G. सो अब हमें क्या चाहिए? वी नीड द एलिमेंट्स इन सेट A1 A2 A3. ठीक है, हमें चाहिए C के C1 C2 C3 एंड C4. ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ हम एसोसिएट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ दिस विद एलिमेंट ऑफ C. तो A1 को हम किससे एसोसिएट कर सकते हैं? कोई आइडिया? इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो. C1. C1 से. क्यों? सर A1 B1 से और B1 C1 से. B1 C1 से है ना. तो हमने A1 को एसोसिएट किया विद C1, A2 विद C2, C2. A3 C3. with C3. ठीक है. So this is called the composition of F and G, and this is denoted by GUF, which is from A to C. एसोसिएट किसे करना है? पहले हमें चेक करना है कि A1 किससे एसोसिएट है. ओके, B1. नाउ B1 किससे एसोसिएट है? विद C1. सो हम क्या करेंगे? A1 को हम C1 से एसोसिएट कर देंगे. फिर सिमिलरली A2 एंड A3. सो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ A एंड C. इतना क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. Okay.
सो ये क्या है ये अभी एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस में. ओके अब ये है पॉइंट नेक्स्ट वन. ठीक है ये हमारा रह जाएगा. दिस वी विल चेक इन क्वेश्चंस. नाउ दिस पॉइंट इज फॉर द कंपोजिशन G F and G to exist, the range of F should be the subset of domain of G. Now, okay. Now, what is the range of this function F? इसका रेंज क्या है? बी पूरा. दिस कंप्लीट. ठीक है. ओके नाउ G का डोमेन क्या है? बी. B. अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो इसका जो रेंज है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ दिस वन. इसका सबसेट होना चाहिए अदरवाइज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल ठीक है अदरवाइज कंपोजिशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. तो आप कंपोजिशन में चेक करेंगे यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी में. ठीक. तो उसमें जो B1 B2 B3 कुछ भी होगा वो इसका रेंज जरूर होगा. ओके सर. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं B4. ओके यहाँ भी हमने ले लिया C4. नाउ दिस इज एसोसिएटेड विद दिस. नाउ अब चेक कीजिए इसका रेंज क्या है. रेंजेस B1 B2 B3 फॉर द फंक्शन F. फंक्शन F का रेंज यही है. ओके नाउ G की अगर हम बात करते हैं तो G का डोमेन क्या है. डोमेन ऑफ G. बी. डोमेन ऑफ G इज कंप्लीट सेट B. तो आप चेक करिए रेंज क्या इसका सबसेट है. यस सर. तो ये पॉइंट हमेशा वैलिड होगा कि अगर कंपोजिशन को एक्सेस करना है तो यहाँ जो भी इसका रेंज होगा दैट विल बी अ डोमेन ऑफ सॉरी सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ G. क्लियर हुआ कुछ. यस सर. ओके एनी डाउट इसमें. नो. ओके ओके सो प्लीज नोट डाउन दिस. फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो कंपोजिशन में और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. Hello Maitri, my voice is audible. Maitri, you can reply me on the chat box. Yes, sir. ओके सो मैत्री कब ज्वाइन किया. मैंने जस्ट अभी देखा आपको. कब ज्वाइन किया आपने. ओके जस्ट अभी किया. ओके ठीक है. सो कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ. ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन इन द मेन टाइम. मैं मैत्री को फिर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट टॉपिक उनको फिर समझ में आ जाएगा. ठीक है जैसे. अच्छा मैत्री वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. ब्रेक तो नहीं हो रही है. No, sir. ओके ओके अगर हो तो प्लीज़ बता दिएगा सो दैट आई कैन स्टॉप द वीडियो. Okay, sir. ओके. This question is great. और एक बार इसको फिर दोबारा समझ लेते हैं. ठीक है कुछ क्योंकि क्वेश्चंस ओके मुझे सर. करवाने होंगे तो फिर मिस हो जाएगा मैत्री का. ओके मैत्री वी हैव स्टार्टेड दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. सो कल आपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे. आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था. Yes, sir. कर लिए थे. ओके क्वेश्चंस ट्राई किए फिर सेकंड एक्सरसाइज. Yes, sir. Try करना शुरू कर दे. एनी डाउट. No, sir. No. Okay, doubt होंगे then please discuss in the next class. So now another topic is composition of functions. ठीक है. Maitri first take a screenshot of this. ठीक है अभी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको नोट करें. So please take a screenshot. मैं explain कर देता हूँ आपको. Okay, sir. Done, sir. Done? Okay. Now
what is the composition of a function? Suppose we have this function is from a to b. Okay, so a1 is associated with b1, a2 with b2, a3 with b3. Okay, and okay, हाँ मैत्री, our class is from 12 o'clock. तो उसमें कोई डाउट तो नहीं था because you are half an hour late. Yes sir, yes sir, वो मैं खुद भूल गई थी. अच्छा अच्छा अच्छा, okay. So f is a function from a to b. So a1, a2, a3, a1 is associated with b1, a2 with b2, a3 with b3. Okay, now we have another function g, which is from b to c. So b1 is associated with c1, b2 with c2, and b3 with c3. Okay, next in set b we have another element b4, which is associated with c4. So यहाँ a4 नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है f a to b, and we have another function g b to c, which is this one. Okay, now what we have to do, we have to find the composition of f and g. ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाए. Okay, we have this function. Now we have to make another function which is called the composition of f and g, which we will denote by this GOF. हम composition find कर रहे हैं f and g, composition of f and g, that will be denoted by this one GOF, and this is from a to c. It's mean हम a and c, between set a and set c we will form a function. ठीक है, b हम remove कर देंगे. We have this set and this set, and this is called the composition of g of f and g, and this will be written as like this GOF a to c. Okay, now we have the element a1, a2, a3. Now Mithri, can you tell me with a1 can be associated with which element of set c? So C1. C1, and why? So because so function की definition यही होती है कि उसको 1 1 and not 2 होना जरूरी है. Oh no 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 no, function नहीं, that was a type of function and that is not necessary in this case. ठीक है, composition हम find कर सकते हैं either it is a 1 1 or on 2 or not, that's not issue. हमने a1 को c1 से इसलिए एसोसिएट किया बिकॉज वी नीड सम रिलेशन, है ना. हमारे पास सेट a है एंड सेट c है, सो वी नीड सम रिलेशन. रिलेशन हमें कैसे मिला? a1 एसोसिएट था विद b1, b1 is associated with c1, so that's why we will say that a1 will be associated with c1. ओके, कोई कंडीशन हमें चाहिए होती है. सो इन दिस केस कंडीशन जो हमें दिख रही है दैट इज दिस a1 is associated with b1, b1 with c1, that's why we will associate a1 with c1. Similarly, A2 is associated with B2, B2 with C2. That's why we will associate A2 with C2. A3 with B3, B3 with C3. So A3 with C3. इतना clear हुआ मैत्री? Yes sir. That's why we are saying that this is a composition of F and G. तो आपको यही check करना है कि A1 set B में किससे associate है, and set B का जो element है that is associated with which element. जहाँ associate होगा we will associate that with एक सेट को हम उससे एसोसिएट कर देंगे. सो वी गेट दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी. एनी डाउट मित्री? No sir. नो. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन. इस पार्ट को बस मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा. ठीक है, वन बाय वन सबको करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. सो ये हमने कर लिया दैट व्हाट इज कंपोजिशन, एंड द सेम थिंग आई हैव डिफाइंड इन दिस डेफिनेशन दैट लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी एफ. ठीक है, एफ एंड जी के कंपोजिशन को हम डिनोट करते हैं बाय जी ओ एफ. उसको हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस, ए टू सी हो जाता है गिवन बाय जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. इसको हम जस्ट अभी एक क्वेश्चन से देखते हैं फिर. ठीक है, now our second point is for the composition GOF to exist, the range of F should be the subset of domain of G. अगर composition exist कर रहा है GOF का, तो range of F जो होगी that should be the subset of domain of G. So for example, we have another element B4, here we have C4. This is associated with this. Okay, now can you tell me the range of this function F? इसका range कितना होगा? So A to C. Range of this function. Range of function f. We are not talking about the composition.
है ना? We have this function. What is the range of this? So A1. No. This is the domain. ठीक है, कल I guess ये topic miss हुआ है आपका. So this is the domain. A1 is associated with B1, B2, B3, or we can say B1, B2, B3 are the images of this. So images को हम range कहते हैं. So for this function, what is the range? So AB should belong to. Okay. Okay, range is the image. So B1, B2, B3 are the image. What is domain? A1, A2, A3 is the domain. Clear हुआ Mitri? Yes, sir. Okay. Now what is the domain? Now we are talking about this function B to C. Now what is the domain of G? So B1, B2, B3. B1, B2, B3 and B4. ठीक है, ये just मैंने अभी लिखा था. ये ठीक है ना? Yes, sir. Okay. Now can you say that this set is the subset of this? Yes, sir. So क्या ये हमेशा होगा? बिल्कुल होगा. ठीक है, यहाँ जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इसके सबसेट होंगे. ठीक, so this is the condition that for the composition GOF to exist, the range of F should be the subset of domain of G. ये हमेशा होगा क्योंकि आपके पास जो images आएंगे that is in the set B, है ना? Images set B में होंगे, तो जो आपके पास यहाँ elements हैं that belongs to set B, that's why ये हमेशा इसके subset होंगे. So for example हमने यहाँ check किया B4 associate नहीं था, so this is a complete set B. And B1, B2, R3 are the images of F. That's why the range is always a subset of this one. So Mithri, clear हुआ या इसमें doubt है? Doubt है तो then please tell me. No, sir, no doubt. No doubt है ना? तो ये तो बिल्कुल understood है कि अगर range हम find कर रहे हैं तो range उसके domain का subset हो जाएगा. Okay, so this is the composition. अब हम discuss करते हैं that what is this? GOFX is equal to GFX. ये क्या है? Mithri, screenshot ले लिया? Can we start the question? Yes, sir. Okay. Next, we have this question. Let F 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9, and G 3, 4, 5, 9, and next set is 7, 11, and 15. B functions defined as F2 is equal to 3, F3 is equal to 4, F4 is equal to F5 is equal to 5, and G3 is equal to G4 is equal to 7, and G5 is equal to G9 is equal to 11. Find GOF. Okay. Now we have this function f. This is from A to B. Now this we have another function G which is from B to C. Now this is given that F2 की जो value है that is 3, F3, F4 and this, and G की भी value है, we have to find GOF. Okay, this means composition of F and G. So GOF क्या होगा? This is A to C. इसमें any doubt? Mithri and Kush? No, sir. No. So what we will write like this. GOFX is equal to GFX. ठीक है, क्योंकि हम एक x लेते हैं, सेट A से एक वैल्यू हम लेते हैं x, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, और एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? GFX, जो हमने यहाँ का GFX is equal to GFX. अब इससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? फर्स्ट थिंग that we have this set, we have another set. This is A and C.
or suppose we have one set this, we have another set this, we have another set this. Okay, this is A, this is B, and this is C. This function from A to B, and this is from B to C. Now we have to form another function. This is GOF, and this is from A to C. Okay. Now what are the elements in set A? This is 2, 3, 4, 5. What are the elements in set B? 3, 4, 5, 9. Now what is the elements in set C? 7, 11, and 15. Now we have to form this. So यहाँ complete elements आ जाएंगे. Set C में हमारे पास complete element आ जाएंगे 7, 11, and 15. Now we don't know कि हमें 2 को किससे एसोसिएट करना है. ठीक है. That will be given by this formula gfx. Okay. So gfx is equal to, now अब हम क्या करेंगे, इन x हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट सेट. तो हमने पुट किया 2. Now anyone can tell me what's the value of f2? 3. 3. यहाँ given है f2 is equal to 3. So it's mean 2 is associated with 3. So f2 value means 3. Now do you know what's the value of g3? 7. 7. 3 किसे associated है with 7. So g3 की जो value है that is 7. So 2 is associated with 3. 3 with 7. So we will say that 2 will be associated with 7. इतना clear हुआ? Yes, sir. So हमें कैसे करना है? Composition जब भी हमें find करना है, we have to write GOFX, then we have to write GFX. Now in place of x, we have to write the value from the first set. Now similarly, what we need? Next value put करते हैं 3. Now what's the value of f3? 4. f3 is 4. So 3 is associated with 4. So we get this 4. Now what's the value of g4? 7. 7. So 4 is associated with 7. So we get 7. Okay, so it's mean 3 हमने जो put किया, 3 is also associated with 7. Now similarly, gf4. What is gf4? 5. 5. g5. Okay. 4 is associated with 5. Now what's the value of g5? 11. 11. So 5 is associated with 11. So 4 will be associated with 11. So there's 11. Now g, next value is 5. So what is the value of 5? 5. f5. So 5 is associated with 5. 11. Then 5 with again 11. So this is equal to 11. So 5 will be this. So ये हमें मिल गया composition GF. Find क्या करना था? GF. So GF क्या हो गया? This one A to C, and these are the values. Any doubt Kush and Maitri in this? Otherwise हम start करते हैं next. Clear, sir. Clear हो Yes, गया sir. Maitri? Okay. ठीक है, बस हमें ordered pair लिखने हैं. So what are the ordered pair? 3 with 7, 4 with 11, 5 with 11. And I missed one. That was 2. The So 2 with 7. 2 with 7. Okay. So this is the composition of fh. Clear हो गया? Yes, sir. Okay. Please note down this and we will start next question. Please let me know once you completed this. Done, sir. Done. Kush, हो गया complete? Yes, sir. Okay. Then try this question. Let f134
Try this question and tell me the answer. Mitri and Kush completed. एक मिनट सर. Okay. Kush का आंसर है 1 3 3 1 and 4 3. So 1 with 3 बिल्कुल ठीक है. Then 3 with 1. Okay. Then 4 with 3 बिल्कुल ठीक. Kush बिल्कुल ठीक है आंसर. मित्री मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा. मित्री कंप्लीटेड. मित्री हो गया कंप्लीट. मित्री यू कैन रिप्लाई मी ऑन द तो चैट. ये जी. सब हो तो गया सर, लेकिन आप एक बार आंसर बता देंगे, मैं चेक कर दूँगी. आंसर मैं ये लिख दूं. आंसर इज चलो आंसर था GOF is equal to 1 3 3 1 and 4 3. This is the answer. Yes sir. ठीक है. Okay, good. Then try this question. There's a function fx. There's another function. We have to find the composition of g and f and f and g, and we have to show that these two are not equal. Please try this.
Okay, Kush got the answer. So I will check. We have to find FOG. So we will write this X. We will write GX, and we will write. Now, what is GX? This 2x plus 1, and we will put this in this. So we will get 2x plus 1 whole square. Kush, बिल्कुल ठीक है. We will check the second one. Second is GOFX is equal to GFX. This is GFX means x square, and this is 2x square plus 1. Kush, these answers are correct. Maitri, complete हो गया? Yes, sir. Okay, getting the same answer? Yes, sir. Okay, good. Then try next. Let f r to r fx is equal to sin x and g r So g. वो जी एक्स स्क्वायर के बाद सर 2x+1 होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, वो नहीं होगा. Because we have this gx is equal to 2x plus 1. Okay, now tell me what is g1? यस सर, Yes. समझ में आ गया सर. एक्स Okay. स्क्वायर, यस सर, 2. है ना, इन प्लेस ऑफ x हम पुट करते हैं या जो भी वैल्यू होती है. सो जस्ट वन मोर एग्जांपल. Suppose this is 2x plus 1, we have to find gy, then this will become 2y plus 1. So we need to put in place of x. So here it is x square, so we'll write 2x square plus 1. Okay. यस सर. Okay, next one. This is sin x, gr to r. This is gx is equal to x square. Find this. Find composition of fn and this one. Okay. Please let me know if you completed this. Okay, kush ka ho gaya solve. So first is sin x square, good, and second is sin x whole square. बिल्कुल ठीक. Okay, so try to do the questions based on composition. ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास. Any doubt in this question, Maitri? नो सर. Okay, Kush, any doubt? Clear, sir. Okay. Now next start करते हैं. Next is inverse of a function. Next one is inverse of a function. Okay. Let f a to b be a bijective function and g there exists another function g b to a which associate all y belongs to b to a unique element
a unique element x belongs to A such that fx is equal to y, and there exists another function g which associates this, such that then g is called the inverse. G is called the inverse of f. Inverse of f is denoted by f inverse. So what is the inverse of a function? We will check this. Suppose there's a set, this is another set, and there's A, this is B. Suppose this is A1, A2, A3, and this is B1, B2, and B3. So our first condition is the function should be a bijective function. Okay, so bijective means 1, 1 and onto both. So Mithri, please check this function is a 1, 1 function. Yes, sir, 1, 1. This is a onto function. Yes, sir, onto also. So this is a bijective. Okay, so in case of inverse to exist, the function should be a bijective. We have this function a to b. Now we will write another function b to a. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है देन इन दैट केस इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट. इनवर्स क्या होगा? पहले फंक्शन था ए टू बी, अब हमने कर दिया बी टू ए. सो पहले बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बस रिवर्स हो जाएगा. अर्लियर ए वाज एसोसिएटेड विद बी वन, नाउ बी वन इज एसोसिएटेड विद ए वन. Similarly, B2 is associated with A2, and similarly, B3 is associated with A3. This is called the inverse of F. Okay, so this is the definition कि अगर हमारे पास f is a bijective function, then there exists g b2a which associate all y belongs to b to unique element x belongs to a. तो यहाँ same way है, b1, b2, b3 are assigned to unique elements. Now what does this mean such that fx is equal to y? Fx is equal to y means when we are putting a1, then we are getting b1. When we are putting a2, we are putting b2, and when we are putting a3, we are getting b3. सो इनवर्स क्या होगा? बी टू ए. बी टू ए क्या रिलेशन फॉलो करेगा, क्या कंडीशन फॉलो करेगा? वो ये करेगा कि इफ यू आर पुटिंग ए वन देन वी विल गेट बी वन. ये कंडीशन होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी विल एसोसिएट बी वन विद ए वन. नाउ इनवर्स ऑफ एफ विल बी डिनोटेड बाय एफ इनवर्स. ठीक है, क्लियर वो? सो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन द फंक्शन विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. हम चेक करते हैं कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो ऐसे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या फेस होगी. सो फर्स्ट हम केस लेते हैं व्हेन द फंक्शन इज नॉट 1 1 बट इट इज ऑन 2. सो दिस इज ए बी. ओके, दिस इज a1, a2, a3, एंड सपोज हमने लिया b1 एंड b2. सो Mithri, टेल मी, दिस इज 1 1 or not? Mithri, this function is 1 1 or not? No, sir. This is on 2 or not? On 2 है Sir, function? onto है. On 2 है ना? So now what we will do, हम inverse find करते हैं. This is not 1 1, but we will try to find the inverse. Now this is b1, b2. This is a1, a2, a3. So what will happen? This b1 was a1 was associated with b1, so this will a1, and a2 was ऐसे होगा, ये हो जाएगा. Now Mithri, tell me, is this a function? क्या ये function है Mithri? Yes, sir. कुछ ये function है? No, sir. नहीं. Mithri, function की definition क्या No, होती sir, है? sir. है ना, Sir, yes, हाँ, sir. यूनिक नहीं है. सो हमने चेक किया कि इफ द फंक्शन इज नॉट 1 1, तो हम उसका इनवर्स, देन इट्स इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. Okay, now a1 with b1 and a2 with b2. Okay, and a3 with b3.
and we have b4. Itna clear hai, Maitri? Now this function is a 1-1 function. Yes, sir. This is an onto function. No, sir. No. Now we will try to find the inverse of this function. So how can we find? We will write first b, then we will write a. Now what is b? b1, b2, b3, and b4. And this is a1, a2, a3. Okay, now b1 will be associated with a1, b2 with a2, b3 with a3. Now b4 associate nahi hua. Now is this a function? No, sir. No. Okay, so it's mean if the function is not bijective, then we can't find the inverse of that function. So if a function is not bijective, then its inverse do not exist. So what is the condition for the inverse to exist? The function should be a bijective function. So first thing, अगर वो आपसे question में कहते हैं कि check whether the inverse of this function will exist or not, and what you have to do, you have to find the, you have to check whether the function is bijective or not. अगर bijective है, then its inverse will exist. Otherwise, its inverse will not exist. Clear हो गया? Mitri and Kush, clear हुआ? Yes, sir. Okay, so please note down this. Question start करते हैं. Inverse find कैसे करना है? वो फिर मैं आपको बताता हूँ. ठीक? So inverse के जो questions होंगे उसमें वो आपसे in most of the time वो आपसे दो points पूछते हैं. First वो कहते हैं check whether the inverse will exist or not. Okay, then you have to show that. और अगर नहीं भी है, then you have to check कि function bijective है या नहीं, and after that you have to find the inverse. So please note down this. We will check one example. जब हो जाए बच्चे मुझे प्लीज बताइएगा, then we will start the questions. Okay, कुछ done. Mitri हो गया? Yes, sir. Okay, let's try this question. If a is equal to 1, 2, 3, 4 and is given by f(x) is equal to 2x, then write f, then write f and f inverse as a set of ordered pairs. Okay, is this is a function given by f(x) is equal to 2x, then write f and f inverse as set of ordered pair. So first of all we will write f. So what we have to do, we will put the values. So please make ordered pair and tell me the answer. Sir. Yes. So पहले हमें f के ऑर्डर पे लिखना है, फिर इनवर्स लिखना है ना? Then you have to find the inverse. Okay, sir. Okay, send कुछ ने आंसर सेंड कर दिया है. सर इसको बाइजेक्टिव शो करना पड़ेगा पहले. नहीं, इसमें जरूरत नहीं है. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट में मैं आपको बता दूँ कब करेंगे इसको. Okay, so answer is 1, 2, 2, 4, 3, 6 and 4, 8. Okay, so this is a function f from a to b. Now what is f inverse? Reverse हो जाएगा, b2a हो जाएगा. So tell me the ordered pair of this.
Okay, Mitri, 2-1. Okay, push 4-2, 6-3 and 8-4. बिल्कुल ठीक है आंसर. सर Yes, Mitri. सर मुझे एक डाउट था सर, हम जब एफ को ए से बी का रिलेशन जब डिफाइन कर रहे हैं तो वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x सर, तो लेकिन सर इनवर्स का दूसरा नहीं हो जाएगा? नहीं, आई मीन हाँ, इनवर्स का बिल्कुल चेंज होगा, बट अभी हमारे पास क्या है, वी हैव दिस ऑर्डर्ड पेयर. सो अगर हमें इससे डायरेक्टली फाइंड करना है, देन व्हाट वी विल डू, हम इसको चेंज कर देंगे. दिस इज फ्रॉम द सेट ए एंड दिस इज फ्रॉम द सेट बी. सो अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है, व्हाट वी विल डू, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे. 2 1 4 2 6 3 and 8 4. है ना. आपका कंडीशन, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब व्हेन वी आर फाइंडिंग द इनवर्स, सो ये 2x नहीं होगा, कुछ और होगा. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सर. ठीक है मित्री, जब एफ एक्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स, वो कैसे करना है, अभी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वी हैव फाइंड एफ, उसमें हमने इंटरचेंज कर दिया, वी गेट एफ इनवर्स. ऑलराइट सर. ओके. बट मित्री, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सर बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम कंडीशन दूसरी वही वाली लगाते हैं अगर 2x है, बिकॉज सर अगर हम 2x मतलब अगर हम बी वालों की डोमेन पे अगर हम 2x लगाएं तो देन द आंसर विल बी डिफरेंट, बिकॉज 2 का फिर 4 हो जाएगा अगर उनकी प्रीइमेज बनेगी सर. तो ये वाला जो रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है वो वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, बच्चा दूसरा कर सकता है. ओके, बिल्कुल ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ बाइजेक्टिव, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा, है ना. तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है. नाउ इन प्लेस ऑफ एफ एक्स, इफ यू पुट y एंड दिस इज 2x, and if we write x is equal to y by 2, and now suppose we are choosing this y from the second set. ठीक है, हम सेकंड सेट से चूज कर रहे हैं इस y को. सो सेकंड सेट क्या था, यहाँ से लेते हैं ना, अभी तो यहाँ गिवन नहीं था. 2 4 6 and 8. सपोज वी हैव पुट दिस 2, तो x कितना हो गया, 2 by 2 is equal to 1. This is 2, this is 1. This correct, Mitri? यस सर. अगर 4 पुट करते हैं, you will get 2. 6 पुट किया. Mitri, I'm taking a break of 1 minute, okay?
Okay, so Mitri got the answer. ठीक है, so we get this f inverse. इसको हम फिर अब how we have to find the inverse of this, उसको हम अभी next question में करते हैं. Okay, then try this question. Let f r to r be defined by fx is equal to 3x minus 7. Show that f is invertible and hence find f inverse. Okay, so in this case first we have to show that f is invertible. Invertible means inverse will exist. So first we have to show that inverse will exist, then we have to find the f inverse. No, Kush, what is the condition to the inverse to exist? Bijective. Bijective है ना. तो जब भी वो कहते हैं show that inverse exists or it is invertible, then we have to show that this is a bijective function. So we have this fx is equal to 3x minus c. So first we have to check 1 1. Okay, so 1 1 हम कैसे check करेंगे? Let x1 x2 belongs to r. ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे, हम डोमेन से सिलेक्ट कर रहे हैं because both the sets are same. such that fx1 is equal to fx2. So we get this 3x1 minus 7 is equal to 3x2 minus 7. Okay, minus 7 cancel and finally we get x1 is equal to x2. Hence f is 1 1. Now next one, on to check करते हैं. On to let y belongs to r. We are taking from codomain such that fx is equal to y. Now what is fx? 3x minus 7 is equal to y. So it's mean x is equal to y plus 7 by 3. Now y हमने कहाँ से चूज किया? फ्रॉम द रियल. तो हम चेक करेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, है ना, कोडोमेन के r. सो अगर हम r पुट कर रहे हैं तो y प्लस 7 बाई 3 should also belongs to r. मेथ्री करेक्ट है और इनकरेक्ट है? अगर हम in place of y we are putting any real number, then will this complete will always be a real number और कुछ exception है? मेथ्री सो शायद रियल नंबर्स ही होंगे. रियल होंगे, है ना. रियल कब नहीं होता? ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. सेकंड इज अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स. अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. इन 2 केसेस रियल नहीं होता, अदरवाइज रियल होता है. ठीक है, और फिर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पॉलिनोमियल फंक्शंस कि वहाँ डिनोमिनेटर में जीरो और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नाउ y plus 7 belongs to r. ठीक है, सो इट means for all y belongs to r, there exists x is equal to y plus 7 by 3 belongs to r. Hence it is onto. मेथ्री इनको इतना क्लियर हो गया है ना. हम यहाँ क्या कह रहे हैं? व्हेन वी विल पुट एनी रियल नंबर देन दिस कंप्लीट विल आल्सो बी अ रियल नंबर. इट्स मीन हमने अगर यहाँ से कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट किया तो उसका प्री इमेज होगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑन टू. मेथ्री एंड कुश क्लियर दिस वन?
Okay, so hence it is bijective. ठीक है, 1 1 भी है, on to भी है, hence it is bijective. Is bijective, so f is invertible. Invertible means its inverse will exist. मित्री इतना क्लियर हो गया? मित्री इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, so हमने यहाँ प्रूफ कर दिया that inverse will exist. Now we will find the inverse. ठीक है, कैसे हम करेंगे? Let क्या लेंगे? Let fx is equal to y. So what was the fx? I guess 3x minus 7. 3x minus 7 is equal to y. We have to find the value of x. So 3x is equal to y plus 7. So this will give us x is equal to y plus 7 by 3. And what we will do, in place of x, we will write f inverse y. This is equal to y plus 7 by 3. ठीक है? This is the inverse of f. f क्या था? f था ये. f था आपके पास fx is equal to 3x minus 7. And what is it? Its inverse. F inverse y is equal to y plus 7 by 3. So Mitri, I guess last question में आप जो in this question आप जो कह रहे थे कि फंक्शन चेंज हो जाएगा. Now suppose fx हमारे पास है 2x. तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा मैत्री? f इन्वर्स विल बी y by 2. अब क्लियर हुआ मैत्री? ये Yes, sir. okay. So how we have to find the inverse? First we have to show that this is bijective, then we have to find the inverse. So inverse में क्या करना है? Let fx is equal to y this, ठीक, और यहाँ लिख देना है what is y? Y belongs to R and it is a codomain. 3x minus 7 is y, this one, this, and we get this. ठीक, f इनवर्स भी कहाँ से कहाँ होगा? सेम R to R ही होगा. अगर सेट A to B होते then अगर ये होता हमारे पास f is from A to B, then we can write f inverse is from B to A. ठीक है, but R to R है, then we will write R to R. हम इंटरचेंज कर रहे हैं but वो हमें शो नहीं हो रहा है. So can we start next question? Okay. Let's try this question. Prove that the function R to R defined as prove that the function R to R defined as fx is equal to 2x minus 3 is invertible. Also find f inverse. Okay, show that this is invertible, also find its inverse. Please try to complete this. ठीक है मैत्री and Kush, please let me know once you complete this.
ओके, सो फर्स्ट आपको शो भी करना है, ठीक है, फर्स्ट शो भी करना है दैट दिस इज बाइजेक्टिव, सो यू नीड टू शो 1 1 एंड ऑन 2 एंड एफ इनवर्स वाई आपके पास आ जाएगा y प्लस 3/2, बिल्कुल ठीक है। मित्री, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? Yes, sir. ओके गुड, ठीक है, बट यू हैव टू शो दैट दिस इज बाइजेक्टिव, उसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, show that f r minus minus 1 r minus 1 given by fx is equal to x by x plus 1 is invertible. Also find f inverse. Okay, first of all जल्दी से इसको show कर दीजिए that this function is invertible function, and then show this that then find the f inverse. अगर कोई डाउट है बच्चे, देन ओके, कुछ नहीं कर लिया सॉल्व, लेट मी चेक। मित्री 1 1 प्रूफ हो गया? मित्री 1 1 हो गया प्रूफ? ओके गुड, ऑन टू प्रूफ हो गया? मित्री ऑन टू प्रूफ हुआ अभी? ओके, ठीक है, ऑन टू। सो ऑन टू में हमें क्या करना है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई and y belongs to second set which is r minus 1, ठीक है। so x by x plus 1 is equal to y, cross multiply x is equal to xy plus y. Now when we have to find x in terms of y, then what we will do, हम इसको shift कर देंगे to left side, take common x, then you will get 1 minus y is equal to y, इसको divide कर दीजिए, x is equal to y by 1 minus 1, ठीक है। सो अब हाँ, पॉलिनोमियल में हमने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो इन दिस केस रूट नहीं है बट वी हैव अ डिनोमिनेटर, सो वाई अगर हमने 1 पुट कर दिया देन वी विल गेट अ जीरो, बट वाई किससे बिलोंग करे, रियल नंबर दिस, ठीक। सो इट्स मीन अगर हम इन प्लेस ऑफ वाई कोई भी वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम दिस वन, हम वो 1 पुट नहीं करेंगे बिकॉज वो सेट में ही नहीं था। सो अगर हम कोई भी ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये रियल नंबर ही होगा। if this complete a real number, तो इसका मतलब हर value of y के लिए except 1 always its pre-image will exist। मित्री इतना clear हुआ? Yes, मित्री वॉइस ब्रेक हो रही है yes, आपकी। sir. ओके ओके ओके,
मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही ना मित्री? ओके गुड, ठीक है। सो ये हमने ऑन टू प्रूफ कर दिया। नाउ इनवर्स में हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, तो सेम वही जो ऑन टू में हम करते हैं इनवर्स में भी हम वही करते हैं, ठीक है। एंड y बिलोंग्स टू, बट वी नीड टू शो देम अगेन, ठीक। y होता है, सो ये हो गया एक्स वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। So cross multiply x is equal to xy plus y. So shift this to left side is equal to y. Then we get x is equal to y by 1 minus y. And in place of x, we will write f inverse y, which is equal to y by 1 minus y. Okay. So what is f inverse? F inverse क्या हो गया? r minus 1 to r minus 1. Okay, this is r minus 1. This is set A, this is B. So this is from B to A. Mithri and Kush, इतना clear है? Mithri and Kush, this is clear? Okay, good. Mithri, clear हुआ इतना? Okay, good. ठीक है. So this was the last topic of this chapter. So this chapter is almost complete. अब आपकी जो डाउट्स होंगे दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपके बुक में 4th भी है देन प्लीज इग्नोर दैट 4th एक्सरसाइज इज नॉट इन सिलेबस नाउ। पहले वो करता था, अब नहीं है। सो ये होमवर्क इज यू नीड टू डू एक्सरसाइज 1.3 एंड निर्कश सर कुछ असाइनमेंट शेयर करेंगे एंड दैट विल बी सॉल्व, उसको भी ट्राई करना है, ठीक है। प्लस पहले ये करना है, असाइनमेंट करना है, देन ट्राई द मिसलेनियस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डाउट्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत छोटे चैप्टर है, तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, इवन हम टाइम इंक्रीज कर देंगे। सो नेक्स्ट संडे पॉसिबल है दैट वी विल डू द क्लास अप टू 2 PM, मैत्री एंड कुश। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारी सैटरडे है ना, सैटरडे तो नहीं हो सकती। ओके, ठीक है, फिर संडे हम एक्सटेंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम डाउट्स डिस्कस करके इनवर्स और ट्राई करेंगे इनवर्स हमारे 2 क्लासेस में हो जाए, ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।